नमस्कार आप सभी को एक्स मुस्लिम भारती चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे आलिया से। आलिया जी एक्स मुस्लिम हैं और एक एक्टिविस्ट हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड मैरिज। एक्टिविज्म इनकी लाइफ का मिशन कैसे बना, क्या इनकी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस रहे, आइए जानते हैं। नमस्ते आलिया जी, शो में आपका स्वागत है। Namaste. Hi. Thank you. Thank you so much for having me. You're welcome. Shukriya. Okay. So we'll start off and I'd like to ask you आलिया जी कि आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो आप किस फिरके से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? Sure. Okay. तो मैं हिंदी बोलने की मैं पूरी कोशिश करूँगी. पर अगर कहीं मुझसे, if I mess up, I apologize beforehand. So let's start this. I have my coffee ready and let's go. So Sure. I belong to a Shia sect, Okay. or I was raised here in the United States. And, as far as my background goes, मेरे roots from my maternal side, UP से हैं. And from my paternal side, they're also from UP, but after the partition, they migrated to Pakistan, Karachi. Okay. Yeah. Okay. So क्योंकि आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, तो आप बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और मजहब का उसमें आपकी अपब्रिंगिंग में कितना दखल रहा? Sure. So, like I said, it's very important to mention that, I grew up in the United States. I'm from the United States. It's supposedly the free world, right? But for those of us from practicing Muslim families, jo practicing Muslim families se hain, that does not matter where we grow up, because hamare liye, our families become the Islamic State. So, I grew up with the forced hijab, compulsory hijab, at the age of, 7. So I had to wear the hijab. I completely hated it. And when people say, that it's a choice, well, मैं ये कहूँगी कि एक छोटे से बच्चे को, उसमें मैं इसकी मर्जी कहाँ है? That was something jo that was forced. That was forced onto me. Let's come to, I belonged to a family who was very much, practicing Muslims. So namaz, roza, going to the mosque, masjid. So that was, that was ingrained from a very, very young age कि तुम एक मुसलमान हो और हम, शिया हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं. And, there were certain things that we always did. राइट. तो आपको बचपन में फिर कुरान भी पढ़नी पड़ी होगी? जी. अच्छा. मैंने So कुरान भी पढ़ा, और मैंने कुरान खत्म करा at the age of 7 साल की उम्र में. 7 साल की उम्र में. जी. तो आप कुछ सुना सकते हैं कुरान से? तो जब मेरी आपसे हो रही थी बात पूनम, आपने कहा था कि सुनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिकॉज तो लोग समझेंगे कि you're a fake ex-Muslim. तो मैं ऐसी बंदी हूँ जो लोगों को, like I don't find it necessary कि मुझे
prove karna hai kisi ko, because I am what I am. But especially for your show, I will recite something. Okay. Um, Thank- अब चाहे लोग जो भी समझे, I don't really care. तो मैं सूरह फातिहा पढ़ लेती हूँ. mhm. Um, mind you guys, it's been 10 years since I haven't really recited कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा 10 साल से. But let's start. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Okay. Yes. So only if someone has actually practiced this can recite like this. All right. Yeah. All right, Alia ji. तो आप I want to know a little bit more about your childhood. मतलब आप किस तरह के एक बच्चे थे और फैमिली में आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता था, इसके बारे में थोड़ा बताइए. Considering Sure. that they were forcing hijab and all of that. Yeah. So I was pretty much a good girl. मैं एक अच्छी बच्ची थी. सुनती थी, पर कभी कभार I would rebel Mm-hmm. जब um जब मुझे when things didn't make sense to me. और मैं अभी religious point of view से बात कर रही हूँ. I would always question. मेरा हर मैं हमेशा सवाल करती थी कि खाली लड़कियां हिजाब क्यों पहनती हैं, लड़के क्यों नहीं पहनते. Like, I would literally ask कि सारी restrictions लड़कियों के लिए क्यों हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं है. For example, मुझे खाली one time याद है, पूरी पूरे मेरे childhood में. And think about this, I was raised in the United States. मैं यूएस में पली बड़ी हूँ. Okay, पर मैं एक दफा मुझे याद है कि हम लोग बीच पे गए, एक दफा. और वो एक Mm-hmm. दफे में क्या हुआ कि the boys, okay, they were allowed, लड़के, men, they were allowed to go and swim. They were shirtless, koi shirt nahi, shorts, trunks, but the girls could not. The girls were covered. And we just sat on the hot beach sand, and we were just preparing food for the boys to come and to have ex- I think she's taking care of the dog, so we'll give her a second. Thank you. Hi. I apologize, guys. ये live है तो live चीजें तो होंगी. मेरी डोर Well मेरे said. डोर पे कोई था. So Okay. my All right. dog was barking. तो मैं क्या कर रही थी, that the girls were on the beach in the hot 98 degrees, and we were just preparing snacks, food. कि ये जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, जब वो थक हार के, मैंने ठीक बोला, थक हार के, थक हार Kind of. Chalega. के तो जब वो पानी से वो आए बाहर, okay, so Mm-hmm. that they can have snacks and food. Right, तो right. ऐसी थी मेरी my upbringing. It was strict. And I would also like to mention something here. कि
since this is a, you know, this is a Bharti channel, मुझे Mhm. ये बहुत important है ये बताना कि to hate the kafir is part of the religion, very much part of the religion. And I remember, you know, बचपन से ही ये, you know, ये डाल दिया था कि because, you know, here when we go to school, हर हर किस्म के लोग होते हैं कि हर किस्म के बच्चे हैं, हर बैकग्राउंड से, पर हमको बता दिया गया था कि एक हिंदू से, you know, ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी है. So this is something very real. Hindu, you know, Hindu phobia does exist, and I think that that is something that people need to talk about, rather than Islamophobia. जो कोई एक sense भी नहीं बनता, you know, because Islamophobia is the irrational fear, of Islam. कोई irrational fear नहीं है Islam से. The fear of Islam is very real. जब हम beheadings देखते हैं, violence देखते हैं, you know, people stabbing one another. France में एक teacher, you know, got beheaded in the daylight. So the the fear with Islam is very real. So Islamophobia is just a bullshit term है. But we should talk about Hindu phobia that is not really talking about. Yeah. I have a question here, Alia. आपने बोला कि हिंदू हेट बहुत सिखाई जाती है, बट यू नो आपके ये जो मुस्लिम्स के जो कुरान है उसमें तो एक्चुअली ज्यूइश हेट के बारे में लिखा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Yes. सो सो जैसे आपका पर्टिकुलरली जैसे जो हाउस होल्ड था, तो उसमें दे वुड स्पेशली टारगेट हिंदूज, या वो इन Okay. ज्यूज या और बाकी लोगों के लिए भी बोलते थे? So I want to make this clear. Jewish के लिए भी है. And we see the hatred when we see, you know, the Palestine and the Israel ka, ka issue. We see that hate here. Okay, there. But since I belong to a Muslim, you know, background and of uh, South Asian roots, Mhm. so the, you know, to hate the kafir was more ingrained. But I want to say कि मुझे कभी भी किसी से नफरत नहीं हुई. मेरे ज्यादातर दोस्त हिंदू ही थे, क्रिश्चियन भी थे, ज्यूइश भी थे. पर पर मैं हेट की बात कर रही हूँ, मैं ऐसी हेट की बात नहीं कर रही हूँ कि हिंदू, यू नो, डू नॉट, यू नो, शुड नॉट एग्जिस्ट. ये ऐसी वाली बात नहीं. बिकॉज हमारे नेबर्स भी थे, okay? हमारे नेबर्स हिंदू भी थे, हमारे नेबर्स सिख भी थे, और वो दोस्त थे. बट हेट मतलब कि ये काफिर है और ये डर्टी हैं, okay? नजीस हैं, तो इनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, इनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, you know. ज्यादा दोस्ती मतलब जैसे घर आना जाना वगैरह ये सब नहीं रखना चाहिए. तो हेट्रेड मतलब यू ऐसे. अच्छा, तो स्पीकिंग ऑफ आपके फ्रेंड्स, हिंदू फ्रेंड्स वैसे बस आपके घर आते थे या कोई ऐसा कोई एक्सचेंज होता था? Very few times. ज्यादातर ये होता था कि अगर कोई भी चीज उनके घर पे होती थी, यू नो, तो मैं नहीं जा सकती थी. पर अगर, यू नो, मुझे खाली वन टाइम याद है कि मेरी बर्थडे थी तो आए थे घर पे. पर ये था कि घर पे बुला लो, और वो भी नहीं कि हमेशा, यू नो. मैं जैसे कह रही हूँ कि एक दफा मुझे याद है कि आए थे हमारे घर पे. पर यूं था. ओके. तो आप ये बोल रहे थे कि आप के ऊपर हिजाब फोर्स किया गया था व्हेन यू वर वेरी यंग. तो आप कंसिडरिंग वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी रही होगी जब जो आपका स्कूल रहा होगा, तो वहाँ पे फिर ये हाउ वाज योर हिजाब फिटिंग इनटू दैट एनवायरनमेंट? ओह माय गॉड. मेरा हिजाब, ओके. तो मैं बहुत स्मार्ट बच्ची थी, और मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि मैं
मैं अपना हिजाब स्कूल में मैं उतार सकती हूँ. So after the first year, Mhm. मैंने ये करना शुरू कर दिया कि बस स्टॉप तक मैं हिजाब पहनती थी. Hmm. बस में चढ़ने के बाद मैं अपना हिजाब को मैं निकाल देती थी, and that's how my whole school day would go. And then after school, when I got off of the bus, जब बस से बाहर निकलती थी तो हिजाब पहन के I would walk home. But can you imagine कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी लाइफ जी रहा है कि I was in fear, and I wore the hijab from grade school से लेके high school की graduation तक. तो ये Hmm. इतना डर था कि अभी मेरी मेरे स्कूल में अगर कोई घर से से आ जाए और मुझे देख ले हिजाब के बगैर तो कैसा होगा. So that was a fear. And when it came to the annual parent teacher conferences, तो मुझे अपनी टीचर को बताना पड़ता था कि मैं ये पहनने वाली हूँ, and this is something that I don't like wearing, मुझे नहीं पसंद है, पर ये compulsory है मेरे लिए पहनने के लिए. Parent teacher meetings के लिए I am gonna wear this, ताकि उनको ये ना लगे कि ये क्या पहन रही है. Like पूरे साल तक तो इसने पहना नहीं, और parent teacher conference के लिए she's wearing it. So that was how my childhood, how my teenage years were, living in fear. And whenever we went kahin bhi bahar, we had to wear the scarf. तो फिर मैं उतार मैं नहीं सकती थी, पर तब तो पहनना पड़ता था, family के साथ अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो. जी। तो जब आप स्कूल में थे और आपके जो साथ के बच्चे थे, वो परहैप्स आपसे पूछते होंगे कि ये आप क्या पहनते हैं एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? या आपको क्यों पहनना पड़ता है? ऑफ कोर्स यू टूक दैट ऑफ, बट हाउ वुड यू काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट एज़ अ how चाइल्ड? how would I explain it? um इन द सेंस जैसे बच्चे पूछते होंगे ना कि हाँ, आप ये क्यों पहनते हैं? तो आप क्या कहते थे? राइट, ट्रू. मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कोई टाइम टाइम था कि मुझे कभी किसी ने देखा स्कार्फ पहने. um मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टाइम था कि किसी ने मुझे देखा हो स्कार्फ पहने हुए, मेरे क्लासमेट्स. बिकॉज मैं जब पहनती थी, वो एक it was only once a year, और वो parent teacher conferences में था, और वो वहाँ के ही तक था. you know uh, ओके, वो 1 घंटा जब मैं श्योर, श्योर। टीचर्स और मेरे गार्डियन और मैं जब जब एक रूम में होते थे. पर अ, फिर मैं उतार देती थी राइट आफ्टर दे वुड लीव. पर आप अगर मुझे पूछ रहे हैं कि अगर मुझे किसी ने पूछा होता तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होता, तो मैं यही बोलती that this is part of the religion, Mhm. and I have to wear it. um, and I think I would definitely say that I hate it. मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था हिजाब. It was very dehumanizing, because the hijab took away all of your identity, because then people just saw you with that, and that became your whole identity. So अच्छा, जब आप यू सेड यू वर अ क्यूरियस चाइल्ड, तो आप जैसे कोई मज़हब रिलेटेड कोई सवाल अगर अपने गार्जियन से पूछते थे, तो क्या आपको जवाब मिलता था या क्या रिस्पॉन्स रहता था? yeah, so I remember, मेरी मेरी नानी जब भी साथ में रहती थी, मेरी स्टेप मदर की मॉम, मैं उनको नानी कहती थी. शी वाज अ वेरी वेरी गुड वुमन. बट जब हम लोग वी वुड गो ऑन डेली वॉक्स, तो इवनिंग वॉक्स में वो सब बताती थी, लाइक रोज के कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो जहन्नुम में बाल से लटकाया जाएगा, और
you know, आग के, you know, गोले वगैरह ये सब, you know, सांप भी होंगे, like all of this, you know, rubbish to instill fear in a child. And mind you, I was a child at that time. Okay, तो मैं ये क्वेश्चन करती थी कि यू नो बट ये सब रूल्स गर्ल्स के लिए क्यों है, राइट? गर्ल्स के लिए हम्म क्यों है, बॉयज के लिए क्यों नहीं है? अगर आप एक दफा अगर अगर नमाज मिस करेंगे तो अल्लाह फिर आपको इतनी इतनी पेनफुल पनिशमेंट क्यों देगा? बिकॉज ऑन वन हैंड, यू नो, God, okay, जो अल्लाह है, he's supposed to love you more than your own mother loves you. You know, 70 कहते हैं कि 70 माँ का प्यार के बराबर है. Okay, हम्म so how would he punish you with all these really really horrible punishments of fire and uh, like barbaric punishments, सही है? तो जवाब यही मिलता था कि तौबा करो, तौबा करो, सवाल नहीं करते, हम्म बिकॉज सवाल करना ही एक सबसे बड़ा गुनाह है. राइट। अच्छा, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं, तो आई हैव अ वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट इज, व्हेन दैट अटैक ऑफ 9/11 हैपेंड, उस टाइम आप यूएसए में थे? और Yes. अगर थे, तो Yes. आपका आपके मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन क्या था? Yeah, so like I said, I grew up in the United States और मैं यहाँ पर ही मैं रही हूँ. मैं कहीं और मैं कभी नहीं गई, except for जब मेरी forced marriage हो रही थी. तो यहाँ पे जब 9/11 का हुआ था, the reaction, the reaction was, was, oh my gosh, ये कैसे हुआ? Okay. The reaction was not, ऐसा कोई reaction नहीं था कि अच्छा हुआ, ये हुआ. The reaction was, just in shock कि ये कैसे हुआ यहाँ पे? नो, बट वर दे, दिस, you're talking, अपने फैमिली का रिएक्शन बता रहे हैं Yeah, आप? yeah, yes, ओके, yes. I ओके, am talking about my, the family who raised me, and their reaction was completely being shocked, and we all were. राइट, राइट, ऑफ कोर्स, द होल वर्ल्ड वाज एक्चुअली। Yeah, yeah. ओके, मतलब उनका ये रिएक्शन तो नहीं था कि अच्छा हुआ ये काफिर जमीन नहीं, पर अटैक हुआ है एंड ऑल ऑफ नहीं, दैट? नहीं. ओके, ये रिएक्शन नहीं था. और मैंने मैंने जब हिंदूज की हेट्रेड की बात करी थी, तो मैंने इस पे भी मैंने ये कहा था कि द हेट was kind of like अगर हम ज्यादा हिंदुओं के साथ मिलजुलेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा. That was how far it was. It was never के uh, like violence की बात नहीं थी. It was just trying to save, trying to uh, save ourselves and make sure that that we don't commit the sin. तो ऐसी hatred थी. And when 9/11 happened, the reaction was it was just shock. And I did participate, neighborhood के जो हमारे बच्चे थे और हम सब हमने participate किया था, in raising donations uh, to help with what happened. और हमें रोका नहीं गया था इसके लिए. So ओके, ओके, ऑलराइट। अभी अभी आपने एक चीज बोली थी, व्हेन यू वर forced into the marriage, so we'll move on and we will discuss ये आपकी जो मैरिज हुई थी यहाँ वाले फेज से। अब आप बताइए। yeah, sure. Actually, मेरा marriage की वो जो whole journey थी, it began when I started my period at the age of 13. Okay, तो मेरे uncle जो है, मेरे चाचा, he is the one who raised me. Okay, because my biological father had
he had died when I was just a baby, and and I was not raised by my biological mom. उन्होंने मुझे नहीं पाला. मेरे चाचा की जो बीवी हैं, she raised me. So when I had my period, my uncle sat me down, मुझे बिठाया और मुझे बताया गया कि now you are a adult. And वैसे भी मैं adult की मैं जिंदगी में जी रही थी, in the house, taking care of everyone and everything, cooking from a very, very young age, cleaning, taking care of their little, their children, but now Mm, that was another layer, get adulthood. Okay, now you have become, um, uh, you're eligible for marriage now. So at mm, 13 years old, I was receiving this talk from my uncle. And what does the child do? एक बच्ची क्या करे? I just sat, and my head was just down, and I just listened. And it was very, I was very scared. और फिर, there were a lot of proposals, Muslim community से बहुत सारे proposals थे. But at nearly 16 years old, 15 and a half to be exact, there was a proposal यहाँ से एक 30 साल के आदमी के साथ. और मैं almost 16 की थी उस वक्त. And that guy whose proposal they accepted, जिसका proposal accept करा था, उसका बड़ा भाई जो है, मेरी cousin से उसकी शादी हो रही थी. तो कैन यू इमेजिन कि मैं शादी अटेंड कर रही हूँ और वो 30 साल का आदमी भी वहां पर है, मुझे पीछा कर रहा है हर जगह. आई फेल्ट सो स्केयर्ड, आई फेल्ट रियली वियर्ड, बहुत very strange. Puri shadi tak, he was just following me and trying to talk to me. And I was a 15-year-old girl who did not want to get married. Mujhe shadi nahi karni thi. I mean, मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं अच्छी थी पढ़ाई में. मुझे हाई स्कूल जाना, मुझे कंप्लीट करना था, मुझे कॉलेज जाना था. But and when they talk about consent, मेरी कोई consent नहीं ली थी. Okay, mm, मेरी खामोशी ही, उन्होंने समझ लिया कि मेरी हाँ है. एंड खामोशी कैसी कि my tears are flowing, मेरे आंसू बह रहे हैं. Like clearly मुझे नहीं करना, but yeah, ये इसके लिए अच्छा होगा, और you know कर देते हैं. But mm. that broke off. वो खत्म हो गया because कुछ फैमिलीज में प्रॉब्लम थे एक दूसरे के साथ, तो वो खत्म हो गया. और वो खत्म हुआ तो आई फेल्ट लाइक, ओ माय गॉश, आई अगेन सॉ सम होप. Hmm. मुझे फिर एक, हिंदी में क्या कहते हैं, एक आशा. आशा की किरण. Exactly. Exactly. But that was very short lived, because then I was taken out of the United States. मुझे United States से बाहर लेके गया. Pakistan, a Hmm. country so foreign to me. मैं ना कोई किसी को जानती हूँ पाकिस्तान में, और जितने भी relatives थे, मैं नहीं जानती थी. मैं, नाम से तो मैं जानती थी, जो करीब करीब थे, पर मैं कभी मिली वगैरह नहीं थी. तो I didn't know about Pakistan, कि वो country कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं. पर मुझे ले जाया गया, और within a couple of weeks I was just, मेरी जबरदस्ती शादी करा थी, एक अनजान आदमी के साथ, और मुझे वहां पे छोड़ दिया उसके साथ और उसके घर वालों के साथ. So it was like a joint family system. So that was And your sorry. So that was your first ever trip to Pakistan, right? that was my first ever trip going to Pakistan. Yes. And it was very, very sad, because I remember that I was crying, the uh
the few days before the marriage, especially, I was crying. You know, there was a little room. We stayed in my aunt's house. I guess ताई ताई बोलते हैं. Mhm. या तो उनके घर में एक छोटा सा रूम होता था. So I would just go there and I would cry like the whole time, just sit and cry. Cause you know, it was like there was no way out. I was in a strange country. I was a child. I didn't know what was going on. I mean, I then knew what was going on, but there was no way for me to get out. अच्छा, जब आपको यूएसए से लेके गए आपके गार्जियंस, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ आपकी शादी करेंगे, और यू दैट न्यूज़ वाज़ जस्ट ब्रोकन टू यू इन पाकिस्तान इटसेल्फ? Yeah. So like I said, you know, the marriage, that whole journey towards the marriage already started, right? At the age of Mhm, uh 13. 13 साल की उम्र में. फिर एक, you know, I was vocally, I guess, engaged to that 30-year-old man. Say it. यहाँ पे. पर वो हुँ, हुआ, that broke off, and within a short while I was again taken. So somewhere in the back of my mind, like I knew, you know, पर ऐसा बताया नहीं गया था. Like यही था कि हम लोग vacation पे जा रहे हैं, and you know, uh Pakistan, वापस नहीं गए. तो you know, this is a chance to go. But you know, I knew in the back of my head that, you know, this could also be for marriage. हुँ. um and you know, and पर मुझे ये नहीं पता था that I would be married off within weeks. You know what I mean? Like I didn't know कि शादी ही हो जाएगी. Like शादी, like निकाह, रुखसती, like सब ही एक साथ में हो जाएगा, और मुझे वहां पे छोड़ दिया जाएगा. So मुझे ये नहीं पता था, and that was very, very devastating. um तो मुझे छोड़ दिया गया वहां पे. पर मुझे आना पड़ा वापस, बिकॉज स्कूल से एब्सेंसेस की एक्सक्यूज ली हुई थी. तो मुझे आना पड़ा यहाँ वापस टू फिनिश हाई स्कूल. और मैंने हाई स्कूल ऐसे फिनिश करा with a ring on my hand. I was freaking married, the only married girl in the whole school. Seriously. ओके. I missed out on, you know, normal things जो यहाँ पे, you know, normal American kids do. Go to prom, you know, go to my graduation. Uh, You know, I didn't even go to my graduation, but that's a different story. I did graduate, but I never went to the formal, you know, the ceremony. But you know, I missed out on a lot of my life because of this, you know, of this stupid, irresponsible, devastating, you know, decision, which is a child and forced marriage, which is a human rights violation. राइट. सो आपकी बेसिकली शादी तो हो गई वहाँ पे पाकिस्तान में, और फिर आपको अपनी स्टडी पूरी करने के लिए, हाई स्कूल पूरा करने के लिए यूएस वापस आना पड़ा. एंड यहाँ पर देन डिड यू स्टे ऑन, या थिंग्स चेंज्ड? व्हाट हैपेंड? Yeah. So after I finished high school, मुझे वापस भेजा गया. So I would say that एक तरह से I was like a remote control toy, you know, being sent there, then you know, being pregnant, then coming back here, then you know, delivery के बाद being sent back there, and then you know, doing the whole back and forth kind of a dance. So I was sent back after high school the first time, and you know, I got pregnant for the very first time. और मेरी DNC हुई थी 4 महीने में. Okay, 4 months of pregnancy, because the ultrasound could not pick up the baby's heartbeat. उसकी heartbeat ultrasound में नहीं pick up हो रही थी. तो डीएनसी करना पड़ा. और आपको पता है, मेरे जो डीएनसी की ऑपरेशन की जो डेट थी, आई वाज इन द हॉस्पिटल. आई एम सॉरी.
Whenever I like talk about this, it, like whenever we talk about these things, it brings you right back, right, Yes, to where absolutely. you were. So I remember that that at that time, the guy who I was married to forcefully, he was in Dubai and he was partying. Hmm. Like I cannot tell you, I was alone there, with his family. I mean, and he was not a nice person. He would गालियां, मैंने कभी भी जो अपनी लाइफ में गालियां नहीं सुनी है. Okay. गालियां, he would body shame me, he would mentally, physically, emotionally, torture me. Um, but the thing is, the all of the pregnancies, the marriage was without my consent. मेरी कोई मर्जी नहीं. All pregnancies में मेरी कोई मर्जी नहीं. So, the DNC was really, really painful, and I was alone by myself. I remember just crying in pain alone at night when I came back from the hospital. And I was just like, just very, very alone. And the doctor had said that, the when he came back from Dubai, the doctor had said that I was not supposed to be, we were not supposed to be, um, Conceive. no, yeah, right, no sexual relationship for like at least 3 months. Okay, but Hmm. वो नहीं हुआ. Okay, I got pregnant again very soon, um, with my son. Your Um, first child. yeah, my first, live birth, like my Right. first full pregnancy. Yeah, and I stayed there for a few months, and then I got sent back here to the United States. मुझे वापस भेज दिया यहाँ पे. और it was a terrible marriage, बहुत खराब marriage. और मैं यहाँ पे भी जब मुझे वापस भेजा गया, तो मेरी मेरी family life यहाँ पे कोई अच्छी नहीं थी. I was treated very, very bad right from my childhood. पूरी childhood में, मुझे बस काम 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 ही करवाया. um, मुझे अब्यूज किया religiously, culturally, और इसके तो पेरेंट्स नहीं है, वैसे भी मुझे अब्यूज किया. तो मैं जब वापस आई, मुझे मुझे भेजा गया, तो ऑफ कोर्स मुझे फिर यहाँ पे भी सुनना पड़ा बातें. बिकॉज मेरा क्या था कि मुझे अगर मारा जाता था पाकिस्तान में, या मुझसे गाली वगैरह से बात करी जाती थी, तो मैं वापस वापस दे देती थी. I was not the one, like I मुझे उसको बताना था कि he does not, शादी तो हो गई है, पर वो own मुझे नहीं करता. Nobody freaking owns me. Hmm. तो फिर अगर मैं ऐसे करती थी, तो जाहिर सी बात है, कॉल्स फिर यूएस में आती थी कि तो आपकी तो बेटी ऐसी है वैसी है, जवाब दे देती. So when I came back, I would hear a lot यहाँ से कि देखो, कैसी लड़की है, कितनी बदतमीज है, like यहाँ पे भी वही torture. Okay, Hmm. but जो मेरा एक प्रॉमिस था, अपने आप से मैंने किया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं कॉलेज जाऊंगी. जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, आई डोंट केयर, मैं अगर प्रेग्नेंट हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं कॉलेज में जाऊंगी. तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ into college. I put myself through college. जब भी मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में होती थी, I would go. I would take classes. पहले मैं अपनी फर्स्ट फुल प्रेगनेंसी में गई. फिर जब मेरा बेटा हो गया, तब भी मैं गई कॉलेज. जब मैं अपनी बेटी के साथ सेकंड टाइम, third time pregnant थी, तब भी मैं गई कॉलेज. फिर जब वो हो गई, then I took both of my kids to my college with me, and I worked because I had to survive. I had to take care of my children. So that is something that I never gave up. Um,
आलिया जी, आई हैव अ क्वेश्चन। आपकी जब प्रेगनेंसी होती थी तो आपको पाकिस्तान से इधर भेजा जाता था। सो दैट वाज़ फॉर बिकॉज़ यू वर प्रेग्नेंट और फॉर सम अदर रीज़न? Yeah, because I was pregnant. Because the thing was that the guy was supposed to come here. तो मेरी फौरन शादी के बाद मेरे अंकल ने फियांसे वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। तो ये नहीं था कि मैं वहां पर ही रहूंगी उसके साथ। वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रहेंगे। तो that's why I was sent back जब भी मैं pregnant थी। So um uh and also because you know I think the best care that I would receive during my pregnancy was here in the United States. तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी मेरा भी हाथ था that like I did not want to have my kids over there. राइट, राइट। Yeah. तो फिर आपकी ये मैरिज एंड कैसे हुई? या मैरिज एंड ऐसे हुई कि जब भी मैं यहाँ पे होती थी ना तो फिजिकली मुझे मुझे टॉर्चर नहीं होता था, राइट? पर कैसे हुँ, कैसे कैसे और टॉर्चर होता था इमोशनली, मेंटली। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजना, मुझसे फोन पे गालियों से ऐसे बात करना। एंड आई वाज 9 months। और ये सब मेरी यहाँ पे जो फैमिली है वो हर चीज जानती थी। और जब भी मैं मैसेजेस या फोन कॉल या वॉइस मेल्स में अपने में अंकल के पास लेके जाऊं कि ये सुने मुझसे कैसे बात करता है, मुझे कैसे ट्रीट करता है। और जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ तो मुझे मारता भी है। तो वो कहते थे नहीं, मुझे नहीं देखना ये सब। आई डोंट वांट टू सी। बिकॉज गर्ल्स, लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शादी को कैसे कामयाब करे और वो कैसे चलाए। मुझे ये कुछ भी नहीं देखना, ये सब। I remember कि कि I was in one of my night classes for my for one of my college courses। night classes में थी। अपने बेटे को साथ में मैं लेके। और एक मुझे टेक्स्ट मैसेज मुझे आया। इतना गंदा टेक्स्ट मैसेज था ना। जो आदमी से मेरी शादी कराई उसने मुझे भेजा कि तुम क्लास में यू आर fucking around। I'm gonna just say it। And हुँ, I think something then kind of like like something in me snapped and I said I cannot take this anymore। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती अब। I'm 9 months pregnant with this this man's child, and it was torture। And you're already going through so much being pregnant, you know what I mean? हुँ, हुँ। And I remember the next day my uncle had come downstairs और वो मुझसे बात करने आए थे मुझे बस बताने के लिए कि डिवोर्स, बिकॉज चीजें बहुत it was बिगड़ very रही थी। bad at that time। Yeah, it was very bad and I was crying a lot and all। तो मेरे अंकल ने आके मुझसे बोला मैं so I used to stay in the basement of the house with my son, and my son was playing on the carpet and मैं उसके साथ बैठी हुई थी। मेरे अंकल आए, वो वो भी नीचे बैठे और मुझसे कहने लगे that divorce possible नहीं है हमारी स्पेशली इस्लाम में। ये सबसे सबसे बुरी चीज है और स्पेशली लड़की को डिवोर्स लेना, और ये नहीं हो सकता। और एंड द ओनली वे खाली ये मैरिज से आप फ्री फ्री तब होंगे जब आप uh, मर जाएंगे। it was very clear। तो मैंने क्या करा जब वो ऊपर गए, मैंने फोन उठाया। मैंने uh, फिर इमिग्रेशन को मैंने कॉल करा और बोला that his visa is not needed। वीजा की कोई हुँ, जरूरत नहीं है और मैं I am going for my divorce and that is it। और मुझे आई नो लोग
लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तुम्हें थ्रेट करा और तुमने क्या करा, फोन को उठाया और कैंसिल कर दिया वीजा। यस, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं अभी कोई स्टेप नहीं लूंगी तो मैं ये साइकिल में आई एम गोना बी स्टक, मैं फंस Hmm. जाऊंगी ये This vicious generational, cycle. या दिस विशियस साइकिल। और फिर मैं कभी भी अपने आप को या अपने बच्चों को लेटर ऑन मैं फ्री नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे कुछ नहीं पता था। सी, I was still in college. I had a little uh, little baby and I was 9 months pregnant. मुझे कुछ I mean आप अगर देखें तो everything was stacked right against me, पर मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। And I knew that my children, मेरे बच्चे, they deserved better. I deserved uh, better, and we deserved to be free. And I took that step. And after I took that step, I told, मैंने अपने family यहाँ पे जो थी, मैंने उनको बताया। और रिएक्शन कोई अच्छा नहीं था। उन चार चार साल में मुझे 4 साल लगे खुला लेने के लिए। उन 4 Hmm. साल में मुझे किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी, पर मेरे बारे में सब बात करते थे। मेरे सामने ही मेरे बारे में सब बात कर रहे हैं। Okay? Hmm. Um, may my uncle, his wife, उनके बच्चे, सब मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं मेरे ही सामने, पर मुझसे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। और कभी कभार मुझे मार भी पड़ती थी मेरे बच्चों के सामने। मेरे बच्चों को भी मार पड़ती थी कभी कभार, अगर नमाज के लिए लेट कोई हो गया। और माइंड यू, मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 4-5 साल का, और अगर फ्राइडे की नमाज के लिए लेट हो गया और मैं उसको शावर में उसको दिला रही हूँ, उसको थप्पड़ पड़ते थे। और उसको थप्पड़ पड़ते थे तो मुझे गुस्सा आता था, तो मैं सामने जाती थी। एंड तो मुझे भी थप्पड़ पड़ते थे। तो it was that kind of a life here. तो आप how long you stayed in that marriage, Aisha, Aliya ji? Yeah, I stayed in that marriage. um do you mean are you वो counting married before are you before the counting the divorce? year? Okay, so I started taking my divorce at the age of 20, 20 something, 21, so hardly 4 years. 4 years. Yeah, hardly 4 years. Yeah. Okay. And your आपका ये divorce process भी काफी लंबा चला या That it was 4 years. मैंने आपको बताया ना कि 4 साल लगे। एंड जब एक लड़की या औरत इस्लाम में डिवोर्स ले उसकी साइड से, तो वो कहलाता है खुला। Okay? तो मैंने अपना खुला लिया था and it took 4 years. 4 साल लगे। so मतलब आपकी शादी हुई till the time you finally like got it done legally, the whole span was 4 years. Is that what you're saying? No, I'm saying that it was like 7 years. Okay. Okay. All right. 7 से या 7 से 8 साल कुछ ऐसे ही थे पूरा। Okay. या और आपका जो वो खुला वाला जो फेज था जब आप खुला ले रहे थे 4 years का आपने बताया, तो वहां से जो पाकिस्तान में बैठे थे आपके सो कॉल्ड हस्बैंड, उनका क्या रवैया रहा आपकी तरफ? Yeah, he did not like it. He did not like it. He started पहले तो पहले तो मुझे पहचानने से ही इन इनकार कर दिया जब उनको पता चला कि मैंने क्या किया उनके वीजा के साथ। तो कहने लगे कि कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं जानता। ठीक है। So I was like, good, you know, Hmm. very good. Like I don't want to have anything to do with you. But I think जब उसको reality जब hit hui कि वाकई में मैं I am leaving this marriage, Hmm. and my children are my children and not his. I would never have his उसका गंदा साया मेरे
पे. Then he started saying, please, खत्म नहीं करो marriage को, or uh, yeah, stuff like that. But but the thing is that he was a grown man, right? Grown man, Pakistan mein, born and raised. um and इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, right? Hmm. And Hmm. I knew what kind of a household he belonged to. They were not very religious. वो religious नहीं थे, but they were full of misogyny, Hmm. you know. तो अच्छा, मुझे, yeah. आलिया जी, जैसे जब ये मुस्लिम मेन को तलाक लेना होता है तो ये 3 बार बोल के और इनकी छुट्टी हो जाती है, और इधर आपको 4 साल लग गए, Yeah, और ऊपर से, that is very unfortunate. राइट, एंड देन ये इनकी तो आयत भी है ना कुरान में अबाउट वुमेन राइट्स एंड ऑल, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Yeah, women, uh, women rights. मैं आपको बताती हूँ मेरी मेरी शादी के दिन. Okay, मेरी शादी के दिन. Okay. हम्म. um ओके, शादी से कुछ दिन पहले, ओके, मेरी आंट ना, जिनके घर हम लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, वो मुझे आई कमरे में, मुझे कुछ चीज़ें बताने के लिए. और उनमें यही था कि कि लड़की को घर बनाना पड़ता है, और वो जो भी तुमसे कहे, उस उसको सुनना, मान लेना, हर बात. तुम अगर नहीं मानोगी तो गुनाह होगा तुम पर, ये सब. ओके. तो लेट्स कम बैक टू माय मैरिज डे. मेरी शादी के दिन, um, मेरे एक्स हस्बैंड की जो बड़ी बहन थी, रूबी, ओके, तो वो मेरे हम्म. पास आई और मुझसे कहने लगी, ये होटल रूम में था, ओके, होटल रूम में, कि तुम बस बैठना और उसको उसको हर चीज करने देना. हम्म. So you just sit, you're like a toy. Just sit and just let him do whatever. So after she left, of course मैंने opposite करा, because even though I was forced into marriage, मैंने आपको बताया था ना, like I wanted to make it clear, उसको मुझे ये clearly बताना था कि मुझे वो own नहीं करता. So I did the opposite. I got a black shalwar kameez. I took off all the makeup. Yep, I took off all the makeup, false lashes, jewelry, हर चीज उतारा मैंने, और एक you know काले सलवार कमीज में मैंने चेंज कर दिया, और फिर मैं बैठ गई. You showed up bland, huh? Yeah. All So, right. but did that stop him? No. Yeah. Okay. तो आपका ये divorce went through, and then after that you were still living with your uncle, right? Yes, G. तो वो वाला थोड़ा सा फेस बताइए, एंड आगे बताइए how things shaped up. Yes. So are you asking divorce ke baad? Yes. Yeah, divorce ke baad, it was just more horrible. By the way, मुझे बताना है कि I did graduate from college. I got my bachelor's in science, and तो वो तो मैंने complete किया. And it was the greatest feeling. सबसे अच्छी feeling थी कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे while I was at my ceremony. So Great. yeah, so that was a really, really good moment for me. But Mm. let's get back. So after the divorce, things were extremely bad, because अब मैं एक divorced uh, लड़, लड़की थी. मैंने जो किया, it was bad. It was looked upon as very bad, um, in the family, in the community, because ये step कोई ऐसे लेता नहीं है.
तो हुँ, और मैंने इतनी यंग एज में 2 बच्चों के साथ मैंने लिया। तो I was emotionally, tortured, physically tortured, और religion, religion का भी बहुत सारा abuse था. Um, मेरी मेरी बेटी को हिजाब पहनाया गया, और जब मेरी बेटी को हिजाब पहनाया गया, तब तो मैं खड़ी हो गई सामने. मैंने बोला नहीं, बिकॉज हुँ, उस टाइम पे डिवोर्स के बाद आई गॉट वेरी वेरी रिबेलियस, इवन मोर रिबेलियस, बिकॉज आई वॉज अ मदर. मैं एक माँ थी, okay? और मेरे साथ जो किया वो किया मेरी पूरी चाइल्डहुड में, फोर्स मैरिज में, चाइल्ड मैरिज में, पर मेरे बच्चों पे यू डू नॉट टच माई किड्स, okay? तो हुँ। वो जब भी ज्यादती करते थे, uh, तो मैं आ जाती थी, लड़ने के लिए, because these are my kids and you do not treat my kids like that. तो हिजाब पहनाने की कोशिश करी मेरे अंकल की वाइफ ने. मैंने उतार दिया. मैंने बोला मेरी डॉटर हिजाब नहीं पहनेगी. संडे स्कूल मेरे बच्चों को जाना पड़ा. पर मैंने क्या किया, मैंने मैंने ये बहुत क्लियरली बता दिया कि संडे स्कूल मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, और मेरे बच्चों का ऑलरेडी स्कूल में इतना वर्क होता है, तो वो पे अटेंशन नहीं कर सकेंगे. पर फिर भी उनको संडे स्कूल जाना पड़ा. पर मैंने कहा कि मैं नहीं देखूंगी. मैं ना संडे स्कूल लेके जाऊंगी, ना मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में जाऊंगी संडे स्कूल की, ना मैं उनको लेने जाऊंगी, ना छोड़ने जाऊंगी, कुछ भी नहीं. okay? तो कुछ टाइम तक वो 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 उनको लेके गए. पर फिर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ये संडे स्कूल वाज़ योर मज़हबी स्कूल और द रेगुलर स्कूल? No, Sunday school was the Mazhabi school. So in the mosque, मुझे भी जाना Right. पड़ा था जब मैं छोटी Okay. थी. Yeah. Okay. Okay. So it's basically Sunday school where they teach religious things. Sunday ko, obviously you go to the mosque and you learn about Islam, Deen, Quranic classes. Right. Yeah. So you had a difficult time at your uncle's house I had a and very very difficult time. और मेरे ज्यादातर दोस्त, मैंने आपको बताया, मेरे चाइल्डहुड से लेके मेरी अडल्टहुड तक ज्यादातर हिंदू ही थे. और मैं बहुत, I was very, after taking the step towards my divorce, मैं बहुत I was very uh, क्या क्या उसको कह सकते हैं, मैं ओपनली रिबेल कर रही थी कि हाँ, मेरे हिंदू दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मेरे ज्यूज दोस्त हैं, और ये हमेशा रहेंगे. और मैं हमेशा उनके साथ मैं जाती थी, अपने बच्चों को लेके जाती थी, गैदरिंग्स में, हर चीज में. एंड आई लेट देम नो कि हाँ, यू नो there's अच्छा तो there's nothing wrong with it. और पता है, वो मेरे बच्चों को मेरे अंकल की जो वाइफ है, she would take my kids, और वो उनको बोलती थी मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ कि तुम्हारी माँ एक जहन्नुमी है, चुड़ैल है, और वो तो जहन्नुम में वो जाएगी, पर वो तुम दोनों को भी लेके जाएगी साथ में. यू नो ऐसी ऐसी चीजें हुँ, बोलना. तो जब हद से बाहर हो गया, और मैंने देखा कि कि मेरे बच्चों के भी साथ ये ऐसा होगा, और स्पेशली मेरी डॉटर, मुझे I wanted to give the world to my kids, especially the gift of freedom. कि हुँ, आप जो भी चाहे मर्जी आप लाइफ में बन सकते हैं, कर सकते हैं. It doesn't matter which religion you uh, you belong to. तो जब हद से ज्यादा चीजें हो गई, तो मैंने क्या किया, मेरे पास खाली 1 महीने का रेंट था. मैंने हुँ, अपनी अ, मैंने अपना
खुद का अपार्टमेंट लिया, ओके। Hmm. और घर वालों को तब पता चला जब ट्रक आया सुबह में कि मैं जा Hmm. रही हूँ। और मुझे याद है कि मेरे अंकल घर पे थे दैट डे। वो अपने बिजनेस पे वो नहीं गए थे, तो वो अपने कमरे में लेटे हुए थे। और एक जोर से आवाज आई उनकी, इफ यू लीव दिस हाउस यू विल नेवर कम बैक हियर, डू यू हियर मी? अब मैंने बोला ऑफ कोर्स, यही तो गोल था, मुझे नहीं आना यहाँ पे वापस कभी, to this hell, to this hell house. Right. So I left, and I did that exactly the same way as I left the marriage. I didn't, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या नहीं है, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो भी है, like this is the opportunity. खाली एक month का rent है, but I have to get out. I have to take my children, far away from these religious, these evil, hateful people. And Hmm. that's what I did. I took the chance. I got myself out. और उनको पता चला जब मैंने step लिया, उसके बाद उनको पता चला। तो yeah. Okay. So finally आप उस hell house से बाहर निकले and you started a new phase of your life. So what was that like? क्या कुछ struggle रहा या कैसा रहा, थोड़ा बताइए. Yeah. You know, um, struggle to था. I moved out on my own. और मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे पास फर्नीचर नहीं था। 9 month तक हम लोग कारपेट पे सोते थे, Hmm. जमीन पे खाना खाते थे, कोई इंटरनेट नहीं था। पर आपको पता है क्या था? It was a peace of mind. Golden. It was peace, and peace is everything. Peace Absolutely. is everything, and the peace was inside the apartment, because outside in the neighborhood, पहले 3 साल तक तो हमको harass करा गया, okay, मुझको और मेरे बच्चों को, फैमिली हाउस से कोई ना कोई, okay, मेरे अंकल की वाइफ, उनके बच्चे, कोई ना कोई, they would try to follow us, they would try to see what we're doing, they would try to speak to me, try to speak to the kids, because see, let me tell you, मैं हर वो चीज कर रही थी जो इस्लाम के खिलाफ था, स्पेशली एक लड़की, okay, स्पेशली एक लड़की होने के हवाले से, आई गेस अगर ये सेंस में कर रहा है, तो आई वाज डूइंग everything that I'm not supposed to be doing. Okay, I got my Hmm. divorce. I moved out on my own with my kids. जो ये भी बहुत Right. बुरा समझा समझा जाता जाता है. था। And you didn't wear a hijab. And I didn't wear hijab. I had a lot of Hindu friends. मैं हर गैदरिंग में मैं जाती थी। कभी कभार मैं उनको घर पे भी उनको बुलाती थी। So, so But they you would know, come in the basement. right. So आलिया जी, आपने ना अपने जहन्नुम वाली लिस्ट पूरी 100% you were scoring. Exactly. और उनके जो खुद की दो बेटियां हैं, वो खुद से, okay, वो तो हिजाब मैंडेटरी था, पर वो लोग खुद से वो अबाया पहनने लगे, okay, तो वो लोग और रिलीजियस हो रहे थे, और मैं बिल्कुल मैं ऑपोजिट थी, okay. Right. शादी के बाद मैंने हिजाब, तो मैंने बिल्कुल, आई टुक इट ऑफ, Hmm. एंड Hmm. या, you know So आपने कहा कि इनके अंकल की फैमिली ने आपको about 3 years, 3 odd years तक परेशान किया. So they were like chasing you guys, you said? या, मेरे बच्चे जब स्कूल से आते थे, बस बस से उतरते थे, तो दे वुड रन,
They हुँ, would come home like 10 minutes late, और मैं नीचे जाती थी, बोलती थी ये मेरे बच्चे कहाँ हैं, um because everybody had already gone to their homes, and then they would come from behind the building or कुछ भी, और मुझसे बोलते थे कि uh that my stepmother was there in the car, and she was chasing them, and she was trying to speak to them. So it was that kind of a harassment, um which we had to face. Kabhi kabar, रात के 11 बजे कोई knock होता था door पे, तो हमको, we would three just freeze कि हुँ, we know कि कोई ना कोई घर से होगा, because I was what the child does, okay, जो um जो आपकी फैमिली से है, okay, बच्चे हैं, तो अगर आपने उनको खाली पाला हुआ भी है, और चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए, पर जो भी वो करता है वो आप पे भी, यू नो वो उसका, how should I say it? इन्फ्लुएंस, नहीं, अ, असर? उसका गुना, उसका ओके, ओके। उसका उसका हुँ, हुँ, गुना, तो वो आप पे भी जाता है. तो जी, they were also coming from that point of view, कि मैं तो खुद ही जहन्नुमी हूँ, अपने बच्चों को भी जहन्नुम में लेके जा रही हूँ, पर मेरा और हमारा जो गुनाह है वो उनको भी मिलेगा. अच्छा, ओके, So you know what I mean? So it was all of this bullshit, कि हमको इसको सेव करना है, ये तो पूरी तरह ही है, काफिर हो गई है, और इसका गुनाह हम पे भी जाएगा, हमको भी को भी मरने के बाद, um राइट, कुछ पनिशमेंट मिलेगी टाइप right, ऑफ अ थिंग। सजा भुगतनी पड़ेगी. So it was all of that, but I took अ, a very strong uh stand. पहले तो मैंने वार्निंग दिया, 3 सालों में, कि अगर मेरे बच्चों के पास या मेरे घर के पास कोई भी आया, मुझे नॉक करा, I will call the police. Okay. हुँ, But they thought कि कि she's just bluffing. Okay. But हुँ, फिर मैंने, like, I was very, मैंने अपने अंकल को मैंने मैसेज करा, for the last time, जब जब उनकी वाइफ दोबारा आई यहाँ पे, मैंने उनको बहुत क्लियरली बताया कि don't underestimate me. Okay. अगर एक और दफा कोई भी यहाँ पे आया, या हम मेरे नेबरहुड में मैंने देखा, या मैंने अपने बच्चों से सुना, तो I'm हुँ, telling you, I swear to God, मैं आपके अल्लाह पे मैं swear करती हूँ कि I'm gonna call the police. मैं एक restraining uh, order लूंगी, and uh, legal action होगा for harassing me. एंड परहैप्स दैट्स व्हेन इट स्टॉप्ड, राइट? Then it stopped, but still, like, once in a blue moon, like once in a year, somebody would come, but his wife then, she never came. Okay. So, Sachwala ji has joined us here. Namaste, Sachwala ji. जी नमस्ते, कैसी हैं पूनम बहन? और हम बेटा अच्छे हैं। आलिया, आप कैसी हैं? Namaste. I am doing well. मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ. आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ बेटा। आप मेरी बेटी हैं और पूनम जी मेरी बहन हैं। मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ। मेरी आँखों में आँसू हैं और ये आँसू खुशी के आँसू हैं। ये आँसू खुशी के हैं। मुझे बड़ा गर्व है, बहुत फ़ख्र है आप जैसी बेटियों पर, जो कि समाज और मज़हब की खड़ी गई दीवारों और रुकावटों के खिलाफ सच्चाई की खातिर उठ खड़ी होती हैं और इतनी मजबूती के साथ, इतनी कॉन्फिडेंटली और इतनी सच्चाई
और इतनी हिम्मत और इतने हौसले के साथ आगे बढ़ती हैं। मैं क्या बताऊं कि जो है आपकी बातें और आपका अंदाज, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस किसी ने भी जो है आपकी इस वीडियो को वो जो कोई देखेगा, मैं कहूँगा कि जो है वो यकीनन आपको खिराज तहसीन पेश करेगा। मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और मोहब्बतें हैं आपके लिए बेटा। आप जी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, शाद व आबाद रहें। आपके पास जो जो नन्हे-मुन्ने जो फूल हैं और इनकी खुशियाँ आप अपनी आँखों से देखें, आपकी आँखों को इनके ज़रिए से ठंडक मिले बेटा, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। लेकिन देखें कि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, जो आप हर गलत बात, हर वो ज़ुल्म, हर वो जो कुछ समाज और मज़हब की तरफ से होता है, आप उसके खिलाफ जो उठ खड़ी हुई हैं, मैं यकीनन आपको जो है सलाम पेश करता हूँ। मेरे दिल से जो जी है आपके लिए सलाम है। जी बहुत सच खुश रहें वाला बेटा। जी, शुक्रिया। um, आपके very very kind words और blessings के लिए। जी बेटा, अपना ख़्याल रखें आप। बहुत जी अच्छा लगा मुझे, आपकी सारी बातें सुनी मैंने और मेरा तो जी भर आया और यकीनन मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ, लेकिन न जाने मुझे उसके बदले में कितनी बेटियाँ मिल गई। I'm so मेरी अपनी sorry। सगी बेटी भी शायद आप ही की उम्र की है। अब क्या करें कि जो है वो मुझे देखना तो दूर की बात, मेरा नाम भी लेना नहीं चाहती है। मेरी अपनी बेटी जो कि जिसको मैंने बचपन से लेके इतनी उम्र तक उसको पाला-पोसा, हर तरह की जो है आराम आसाइश पेश की, लेकिन हाल ये है कि अब वो मेरा नाम तक लेना नहीं चाहती। चलें बेटा, बहरहाल आपकी Yeah बातें सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा खुश रहें। जी मुझे बड़ा शुक्रिया फ़ख्र सच है आप वाला। पर, बहुत फ़ख्र है। जी। Thank you। स सचवाला By जी the way, जॉइन करने के लिए थैंक यू। जी, अपना ख़्याल रखें आप। तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें। मैं इजाज़त या चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है? या आप जी कंटिन्यू कीजिए। आलिया, you were saying Hi। something. Yeah, I was just saying, मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं रहे अब, मेरा बेटा वो 18 साल का होगा यही साल में। तो तो it's it's been a journey, and I'm really really proud. I'm really really proud of my kids. They are the world, and I'm so happy कि मैं उनको बाहर में ला सकी ये सब ये सब बकवास से, religious and cultural बकवास से मैं उनको बाहर ला सकी, and they're free, and they're happy, and they know that they can achieve whatever they want to, and I don't have any I don't have any restrictions. It's just be a good human being. That is the most important. Be a good human being. Do good in this world. Do good to others. Be kind, and do good to yourself. Be good to yourself. Love yourself, and be confident. And yeah, that's what I've So taught my kids. yeah, you've groomed them really well. तो आलिया जी, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपने इस्लाम को इतने करीब से देखा है, जो इतना एक रिस्ट्रिक्टिंग एक कल्ट है, और व्हाटएवर एडजेक्टिव यू वांट टू गिव टू इट, तो आपकी नजर में इस्लाम क्यों टिका हुआ है? लोग क्यों फॉलो करते हैं इस्लाम को? आप क्या समझते हैं? Why do people follow Islam? Jahannam ke dar se. सो डर इज द मेन रीजन, राइट? Dar dar is the main reason, and the obsession. Okay, ये जुनून जो है, मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, कि ये लोग जो हैं ये जीते ही हैं
मरने के लिए. Okay. Yes. They truly think that life starts after you die. और वो जो भी अपनी ये physical reality में, this is like a test for them. This is how to be, the best Muslima, how to please Allah, how to please uh, uh, Momo matlab Prophet Muhammad. And and how for the girls, how also to please the men in their life, their fathers, their brothers, their husbands, so yeah, because if they do all that, they will get rewarded. With the guys get 72 hurs, uh 70 hur मिलेंगी उनको. अच्छा, हमने तो सुना है कि वो जो हूर हैं, एंड आई होप यू नॉट माइंड माय क्वेश्चन, No, जो वो go हूर ahead. हैं कहीं-कहीं हमने ये सुना है कि वो जो हूर है ना, उनका सुराख नहीं होता. सो व्हाट Oh इज़ God. द व्हाट इज़ द बिग डील? अगर in that case, I mean, what is the attraction to, run for those 72? I don't know how far that's true, but some people say that. Yeah, मैंने ये पहली बार ये आपसे सुना है. मुझे ये पता है कि they're virgins, Right. 72 अच्छा. virgins, and the whole obsession with virginity and purity, ये जो toxic purity culture है, जो खाली लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है हर चीज, all these restrictions. But yeah, रिसेंटली एक इंडियन मौलाना किसी चैनल पे बोल रहे थे कि जब वाइफ डाइज तो उसको उन 72 हूरों की वो सरदार बनती है. हस्बैंड को 72 हूरें मिलती हैं और जो लेडी है वो इन 72 हूरों की सरदार यानी उनकी मॉनिटर बनती है. yeah, मैंने भी यही सुना हुआ है कि कि जब that the guys, जो आदमी हैं उनको हूर मिलेंगी as their reward, और जो औरतें हैं उनको वो ही घिसे पिटे शौहर मिलेंगे, husbands मिलेंगे जो वो अर्थ पे जो अर्थ सो में थे. यू आर लकी कि आप निकल गए, नहीं तो वही मिलना था आपको फिर पाकिस्तानी. Yeah. अच्छा, तो मेरा एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, इस्लाम से तो आप निकल आए आलिया जी. तो फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपका क्या स्टैंड है? आप किसी को मानती हैं, नहीं मानती हैं, कुछ बताइए. Yeah. So मैं एक ex Muslim हूँ, right? और हम्म. मुझे ये कभी नहीं पता था, like I didn't know, मुझे नहीं पता था कि ex Muslim एक word है. हम्म. मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही थी तो तब मुझे पता चला कि मेरे भी जैसे और बहुत बहुत सारे लोग हैं. पर मुझे उसमें भी बहुत जल्दी पता चल गया कि a lot of ex Muslims जो हैं वो they leave the cult of Islam, पर वो एक दूसरे cult में चले जाते हैं. वो atheism है. Okay. तो मैं atheist नहीं हूँ. जो भी सुनता है कि कोई एक्स मुस्लिम है तो वो यही असूम करता है कि वो एथियस्ट होगा. No, मैं atheist नहीं हूँ. I am I'm a proud pagan. Um, हम्म. yeah, so I do worship Shiva and Ganesha as well, and I'm also a Unitarian Universalist. So Unitarian Universalist pagan. Yeah. वाओ, वाओ. अच्छा, एंड अब सिंस वी नो यू आर एन एक्टिविस्ट, तो आपका ये एक्टिविज्म के बारे में ऑडियंस को थोड़ा बताइए. Yeah, जी, sure. तो ये शुरू हुआ 7 साल पहले. मुझे पता था कि मुझे कुछ करना था. किसके लिए करना था? मुझे पता था कि शायद um, और भी लोग हैं जो मेरी सिचुएशन में uh, होंगे या थे. तो मैंने इंटरनेट पे जाके गूगल पे मैंने टाइप किया forced marriages,
in the United States में. तो मुझे एक organization का पता चला. It's called Unchained at Last. वो New Jersey में है based. So I clicked on to their website and I got to know कि और बहुत सारी child brides हैं, survivors हैं of forced and child marriages. तो मैंने उनसे connect करा, and that's how I got involved. I lobby for the legislation and laws जो uh, जो child जो marriage की age को बढ़ा देती हैं 18 तक. आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर यहाँ पे बिकॉज हमारे खुद लोगों को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं पता है कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो चाइल्ड मैरिज को अलाउ करती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मेरी खुद की स्टेट में एक 15 साल के बच्चे की शादी हो सकती है अगर उसके पेरेंट्स अप्रूव करें विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट. और ये सबसे बड़ा लूप होल है, ये एक पास है. पेरेंट्स जैसे मेरे गार्डियंस थे, उनको लीगल पास देना कि हाँ आप शादी करा सकते हो. So I lobby for the legislation, bright line of 18, and so far छह states हैं जिसने marriage age को 18 करा है. और we have 46 more states to go. तो मेरी ये journey रही है. And also मैं survivors को मैं mentor करती हूँ. So I do work with child brides closely. मैं Unchained at Last के साथ, that is my involvement. Also, I am a vocal ex-Muslim, so I'm also a the ex-Muslim rights and women's rights activist. Right. That's Yeah. wonderful. That's like courageous and beautiful. तो आप जैसे किसी, for example, आप किसी child marriage को होते हुए देखते हैं, और it is in your periphery कि ये होने वाला है or something of that sort, are you able to intervene or No. not really? No, No. legally, Okay. legally we cannot see. That is why we are in favor of raising the marriage age to 18, because यहाँ पे 18 साल में आपको full rights मिलती हैं. Okay, because you are not considered a minor, you are a adult. तो 18 साल में आपकी फैमिली अगर आपको फोर्स कर रही है तब आप हेल्प ले सकती हैं, आप लीगल हेल्प भी ले सकती हैं. पर आप 18 से बिलो आप हैं तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, शेल्टर्स वो आपको नहीं लेंगे. They're going to take you right back to your family. Yes. Yes, Yeah. that's true. Okay. You're doing a great body of work. It takes some courage and some stamina to pursue this. So we are towards the last leg of the stream. तो आलिया जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली गर्ल्स एंड स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स को कोई मैसेज दें. Yeah. Know your worth. Know your worth. और अगर आप कभी भी ऐसी लाइफ की सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि आप कंप्लीटली होपलेस हैं, आपके पास कोई कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रही, you need to know कि आपके पास पावर है. You have to work with what you have. आप फोकस अपनी करें कि मेरे पास क्या है जिससे मैं लेके I can move forward. वो चाहे crawling की state में क्यों ना हो, baby steps.
but focus on what you can do with what you have. अगर हम focus करेंगे problems पे तो और ही we're just gonna face problems because because हमारे mind में यही होगा, all we're gonna see is problems. तो when you're in a hard situation, tough situation, try to focus on the positives. Look at what you have and what you can do. Even if it's very, very small steps, but those small steps make such a huge impact. Correct. And to the Muslim girls out there who are listening to me, who are who love Islam, who stand और ये सब hijab controversy जो हो रही है जो इंडिया में, I just think it's really, really ridiculous. Hijab से ninja costumes, कुछ लड़कियां चाह रही हैं. I just think it's very, very rude. It's very despicable. And it should not happen because the uniform unifies, और वो हर किसी के लिए है uniform. And the Right. hijab and the niqab and the ninja costumes वो divide करते हैं. वो एक non hijabi को एक बहुत बुरा मैसेज देते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ. I cannot be touched. मुझे कोई touch नहीं कर सकता. तुम्हें कर सकता है because तुम non hijabi हो, जहन्नमी हो. Right. So I want to tell those girls who are watching, learn your religion. खाली especially जो non-Arabic speaking background से हैं. हमारे में क्या होता है कि बस कुरान को रटाया जाता है. Okay, meaning किसी को नहीं पता होती है. Okay. So Exactly. it's very important कि आप girls जो मुझे सुन रही हैं, जो इस्लाम को love करती हैं, हिजाब को promote करना चाहती हैं, all of that, you need to research your own religion. आपको research करना चाहिए. आपको कुरान बार-बार अपनी language में पढ़ना चाहिए और question करना चाहिए कि वाकई में इस्लाम एक औरत के लिए है या खाली मर्दों की सहूलियत के लिए है religion. And also look into the life of your prophet. Okay, Momo जो थे 6 साल की बच्ची से शादी करा एक बुढ़े ने. Okay, और फिर he had sex with her at the age of 9. So think about it. आप ऐसे आदमी को follow करना चाहते हैं? So please do your research. और वो मुस्लिम लड़कियां जो इस्लाम के साथ नहीं रहना चाहती, इस्लाम के अंदर नहीं रहना चाहती, पर कुछ बोल नहीं पा रही हैं, just be strong and safety is very, very important. आप पहले अपने आप को safe करो. Okay, get yourself out into a situation, into a space where you are safe. फिर कोई आप stand ले. So this is what I wanted to say. Beautiful. Thank you for that lovely message. So with that, I think we will conclude here. तो आलिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और व्यूअर्स, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. You are Thank you all. absolutely welcome. Thank you so much for having me. और मैंने half time मैंने हिंदी में बोला, half time मैंने English में बोला, पर I We'll tried give you a my pass. best. मैंने अपना best दिया, and yeah. Yes, you did. You did. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. With Thank that, thanks everybody. Jai Hind, Vande Mataram. Yes.